यह रहीम का मकबरा है, दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में स्थित। वही रहीम जिनके दोहे सुन सुनकर और पढ़कर हम सब बड़े हुए हैं। कुछ छतरियां हैं आगे वाली जो गिर चुकी थी, पर उनका जो पत्थर वगैरह है वो यहीं साइड पे पड़ा था, तो उसी पत्थर को इस्तेमाल करके इन छतरियों को फिर से बनाया गया। और कई जगह आप देख रहे हैं खाली है। वो इसलिए खाली है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो किस तरह ओरिजिनल था, तो जहाँ कोई एविडेंस नहीं है उसको छोड़ा गया। और बाकी जगह जहाँ जहाँ एविडेंस था वहाँ पत्थर, संगमरमर और लाल पत्थर वापस लगाया गया। तो 2-3 जो बड़े बड़े काम यहाँ हुए, एक तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, फाउंडेशन एवरीवेयर हैव बीन स्ट्रेंथन्ड। द सेकंड इज सम ऑफ दैट, हम किसी भी काम करने से पहले सोचते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइट। एंड ओवर हियर द सिग्निफिकेंस इज दैट इट इज द टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खान खान। उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनाया था। सो द पर्सनैलिटी इज लार्जर देन लाइफ। So the historical, cultural significance is more than the archaeological, architectural significance, and in that sense, restoring the dignity of the burial place has been very important. So the 2 or 3 things that you see, also some of those arches अंदर देखेंगे बहुत खूबसूरत काम है, so that has taken a lot of effort. Closely you can see stone that is more red is original, and more dull in white marble is original. That is, those are the references. So basically, the building was used as a quarry. 2 चीज़ें थी, एक तो structural weakness थी और building was used as a quarry. So both of that we had to undo in this effort. The point is, we did an exhaustive archival research, but really all our references are at the building itself. रहीम यानी अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खान के बेटे थे। वही बैरम खान जो बादशाह हुमायूं के बहुत ही नज़दीकी से पैसालार थे। रहीम की माँ मेवात इलाके से थी, लिहाजा रहीम की मादरी ज़बान हिंदवी थी। हालांकि वो फ़ारसी, अरबी और तुर्की में भी उतनी ही महारत रखते थे। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से तो एक थे ही। वे बहुत ही आला दर्जे के कवि और कूटनीतिक भी थे। लेकिन ख़ास बात यह है कि हिंदू धर्म ग्रंथों से उदाहरण लेकर उन्होंने जो दोहे और कविताएं रची, उनकी वजह से उनकी तुलना अक्सर भक्ति काल के बाकी महान कवियों सूरदास, तुलसीदास और कबीर के साथ की जाती रही है। There were 3 things that, he mentioned that there were 3 places which seemed like we've not finished the work. One was the dome, which is, like he said, the intention was to strengthen the dome, and hence we put marble along the base. And we have sort of built it up on one side so that you get it's a symbolic representation of what material was used to make it. I mean, any building will definitely require periodic upkeep, but this was a major conservation effort that has lasted 5 years. Any other conservation effort would be a later consideration that we have done. So this is Ujjwala just showing you the picture of what it looked like before we started. So it's a lot of it is just painstaking cleaning work. About 80-85% is original, and the rest is just looking at what exists and restoring it. But this is unique. I mean, there is nothing like this anywhere else, and you can almost sense it. So unique to this building in the sense that this is incised plaster work, and Rahim uses a lot of elements like the swastik and so on. So this is the way it is. I mean, there is no other building I know of that is just so beautiful in just one kind of work. It's this pure white. And the intricacy, and it's very fortunate that a lot of this has survived, like those medallions, but it was covered under layers of soot and paint and so on. So things like the flooring were just completely removed, which we've had to put back. So you see, when you look at this painting, you'll see portions of it where it was cement plaster.
So where it was cement plaster, we of course restored it to original pattern. So इन हिस्सों में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मिसिंग था, उधर हमने रेस्टोरेशन किया है, बाकी तो सारा ओरिजिनल ही है. But काम करने के लिए it has been much more difficult to clean rather than restore. सीमेंट हटा के करना इज आसान, बट इसको प्यार से साफ करना, layers of paint and all of that without damaging it, has been a major challenge. रहीम को अपनी कविताओं व दोहों के साथ साथ आगरा, लाहौर, दिल्ली और बुरहानपुर में कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाने के लिए भी जाना जाता रहा. इस मामले में उनकी दृष्टि बेहद कलात्मक मानी जाती रही. सन 1598 में रहीम द्वारा अपनी बीबी महाबानू के लिए दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में बनवाया गया यह मकबरा उनकी उन सभी इमारतों में सबसे भव्य और शानदार माना जाता है. So conservation, in many ways, I compare conservation with medicine. Sometimes to get better, all you need is rest, and which is preservation. And sometimes you even need a organ transplant, which is reconstruction. So it goes the whole extreme. One of the basic principles is that no individual should have 100% of the decision making for any historic building. The historic building is owned by the country, the public, the world. So over here we had three major institutions, the Archaeological Survey of India, Interglobe, ASI, ourselves working, but even then we found the complexities too much. So we invited not only experts but also thought leaders and so on, so a range of people to review the conservation plan that we had done and review the conservation works that were on. So the gardens unfortunately originally extended all the way to Humayun's tomb, but whatever we had, we created a small charbagh over here, planted orchards and planted tall trees on the periphery. But it was like Humayun's tomb and like all of those other buildings, a garden too. Okay? चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश. बादशाह अकबर ने बड़े पैमाने पर संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था. उनके शासनकाल में महाभारत, अथर्ववेद और गणित की तमाम किताबों के अनुवाद हुए. खास बात यह कि अकबर ने जिस सांस्कृतिक संगम की नींव डाली थी उसमें रहीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा. सन 1587 से 1605 के बीच खान खाना ने रामायण का चित्रित फारसी अनुवाद किया. उसमें अनेक कलाकारों की कला का योगदान था. रहीम कला के संरक्षक थे और किताबों से उनका खास लगाव था. उन्होंने जिस तरह से रागमाला और तैमूर नामा की पांडुलिपियां तैयार करवाईं, उससे यह संकेत मिलता है कि वे हिंदुस्तानी व फारसी साहित्य में बहुत ही गहरी रुचि रखते थे. साथ ही वो दूर दराज से आने वाले सैकड़ों कवियों, संगीतकारों, कलाकारों को आश्रय देने के लिए भी जाने जाते थे. सन 1598 में अपनी बीबी महाबानू की मौत के बाद रहीम ने यह मकबरा बनवाया था. उसके तकरीबन 29 साल बाद सन 1627 में लाहौर से दिल्ली लौटते हुए रहीम की मौत हुई और उन्हें भी यहीं इसी मकबरे में अपनी पत्नी के बगल में दफनाया गया. लेकिन मुगल काल के बाद यह मकबरा धीरे धीरे पत्थर की लूट का एक हिस्सा बनता गया. If you just notice the concept, a lot of this facing was missing. So where it is missing, again with the same thing with the evidence you have. But critically, what we requested was is what has been done. What was the original plan? And it's come into a lot of discussion because many people have said complete it. Equally, a number of people have said don't do anything.
So that's what makes conservation fun. But our explanation for doing what we've done is to strengthen the base of the dome and to indicate to visitors and people who pass by what the original finish was. Okay. This is largely original, and it's only a little bit where it was missing has been restored. So over there you can see half of it is original, and what has been original is only cleaned and conserved. And where it was missing, where it was cement layers, I mean, this is that is a sort of But again, the corner arches had collapsed in places. But again, these corners are very important in terms of stabilizing the structure. So, which is why it was very important for us to also recreate these corners, because that's what holds the whole building together. So, which is why these corner pillars are very important to restore and to ensure the structural stability of. no amount of money could have got this work done in the government setup. You need a public-private partnership. You need CSR. You need all of that. And so, what this project really demonstrates is that this is not the government's responsibility alone. For me, what is happening here is a way forward for all of India. You see sites and ruins all over the world, all over the country. The government neither has the human resource. So, what is important is not kitne paise kharche. The point is somebody's committed to it and done it.